Hello friend, how are you? I am Advocate Gaurav Kumar Gupta. I am Chartered Accountant. I am MBA Finance and PhD holder. My project डेरिवेटिव मार्केट फ्यूचर ट्रेंड एनालिसिस। आज हम कुछ केस के बारे में डील कर रहे हैं जो सीआरपीसी से डायरेक्ट इंटरलिंक करता है। सीआरपीसी में बता रहा है सलाउद्दीन अब्दुल्ला असमद सिख वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस है। ये 1995 STPL 10641 सुप्रीम कोर्ट, ये है 1996 सुप्रीम कोर्ट 1042 इक्वल 196 1 SSC 66 IT 95 एंड सुप्रीम कोर्ट 12496। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने AM अहमदी CGI SC सेन एंड KS परिपूर्णन JJ सलाउद्दीन अब्दुल्ला समीद सिख ये एप्लीकांट थे वर्सेस द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ये केस है। ये रिस्पोंडेंट थे। स्पेशल लीव पिटीशन में CRL नंबर 3628 ऑफ 1995 डिसाइड ऑन 11/12/1995 फॉर बॉम्बे। ये पॉइंट बताता है क्रिमिनल PC 2 ऑफ 1974 सेक्शन 438 में बेल एंटिसिपेटरी बेल प्रोविजन था। एंटिसिपेटरी बेल ग्रांट ऑफ प्रोसीजर रिगार्डिंग द एंटिसिपेटरी बेल इज ग्रांटेड इन एंटिसिपेशन ऑफ अरेस्ट इन नॉन वायलेबल केस but that does not mean that the regular court is sought to be bypassed. That is the reason why the High Court very rightly fixed the outer date of the continuance of the bail. Bail anticipatory bail procedure regarding anticipatory bail is granted in anticipation of arrest in non-violable cases, but that does not mean that the regular court which is to try the offender is sought to be bypassed. That is the reason why the High Court very rightly fixed the order date for the continuance of the bail. CRPC 1973 section 438। ये CRPC का यह केस है। ऑर्डर में क्या हुआ था कि पेटिशनर फाइल एन एप्लीकेशन इन द हाई कोर्ट being criminal application number 2230/95 under section 438 of the Code of Criminal Procedure and secured and the interim anticipatory bail order which was to ensure up to 26/9/1995 the High Court imposed a certain condition, one of which was that he will report all the police station every day till 25/9/1995. The petitioner says that he has complied with each and every condition imposed under that order. With that it is made was an interim matter came up on that day of the final disposal before the same learned judge. He directed the participation to directed to petitioner to move a regular bail application before the court which was his since of the criminal case pending against him, and observed that the bail application should be disposed of uninfluenced by the observations made in the earlier order of 3/9/95. It is against this order passed by the learned single judge of the High Court that this SLP is filed. A special leave petition. SLP का होता है special leave petition is filed. BC on reason to entertain this petition under section 430 of the Code of Criminal Procedure when any person has reason to believe that he may be arrested on an occasion of having committed a non-violable offence. The Court of Sessions may, if think fit, direct that in the event of such arrest he shall be released on bail. In passing that order it may include such condition having regard to the fact of particular case as it may deem appropriate.
Anticipatory bail is granted in anticipation of arrest is non-violable case, but that does not mean that the regular court, which is to try the offender, is sought to be bypassed, bypassed, and that is the reasons why the High Court very rightly fixed to outer date for the continuance of the bail on the date of its expiry directed that petitioner to move the regular court for bail. That is the correct procedure to follow because it must be released that when the Court of Session, the High Court, is granting anticipatory bail is granted at the stage when the investigation is incomplete and therefore it is not informed about the nature of evidence against the alleged offender. It is therefore necessary that such anticipatory bail order should be of a limited duration only, and ordinarily an expiry of that duration, extended duration, the court guaranteeing anticipatory bail should leave it to the regular court to deals with the matter and appreciations of evidence placed before in it after the investigation. He made progress, the charge sheet is submitted. It should be released that an order of anticipatory bail could even be obtained in case of serious nature, as for example murder, and therefore it is essential that the duration of that order should be limited and ordinarily the court guaranteeing anticipatory bail should not substitute itself for the original court, which is expected to deal with the offence. It is that court which has the consider whether, having regard to the material placed before it, is the accused person entitled to bail. In the instant case, therefore, the High Court had followed the correct procedures. We see no reason to interfere. However, Mr. Bhasmi, Bhasmi learned counsel for the petitioner state that since this court had granted an interim order by which the duration of the order was extended, he has not applied for bail before the regular court. He may do so if so desired. Within 2 weeks from today, the petition will stand disposed of accordingly. ऑर्डर जो हो गया इसके अकॉर्डिंगली किया गया। ये केस क्रिमिनल पीसी 2019-74 का सेक्शन 438 में जो बेल एंटिसिपेटेड ग्रांट हुआ था उसी का यह ऑर्डर आपको पढ़ के बताया गया कि क्या ऑर्डर में लिखा गया था। इस ऑर्डर को हमेशा आप याद रखिएगा क्योंकि ये ऑर्डर बार बार जजमेंट राइटिंग में भी यह काम आता है। जब आप जजमेंट राइटिंग लिखेंगे तो ऑर्डर कैसे लिखा जाता है उसके बारे में हम आपका जिक्र किए हैं, इसको आप पढ़ेंगे। ये CRPC से रिलेटेड है, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से रिलेटेड, जो भी अब नया BNSS हो गया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। अगले वीडियो में हम और भी केस को डील करेंगे। अगले वीडियो में केस का नाम बता दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिफ्यूजल दयाल ओरस वर्सेस स्टेट ऑफ MP का केस है। ये इसमें ऑथर थे, बेंच थे P सत्वशिवम, राजन गोगी, शिव कीर्ति सिंह, ये था बेंच था। ये दो जजेस थे जिसमें 2 बेंच का जज ने रिपोर्टेबल किए थे। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सिविल ओरिजिनल जुरिडिक्शन रीट पिटीशन सिविल नंबर 613 ऑफ 2007 का। जस्टिस रिफ्यूजल दयाल रिटायर ओआरएस पिटिशनर थे और वर्सेस स्टेट ऑफ MP रिस्पोंडेंट है। इसका हम कल जजमेंट पढ़ के बताएंगे इसका जजमेंट क्या था। P सत्वाशिवम CGI का जजमेंट था द प्रेजेंट रीट पिटिशन अंडर आर्टिकल 32 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। इसके बारे में जिक्र करेंगे और उसके केस को पूरा डीप में समझेंगे कि इसका क्या एग्जैक्ट मीनिंग था। यह बहुत लंबा केस है, इसका जजमेंट भी बहुत लंबा 16 पेज का जजमेंट है। उसको कल हम हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपको एक्सप्लेन करेंगे। आज का वीडियो यहीं पे वाइप आउट कर रहे हैं। डेट्स ऑल।